अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएसके वेबिनार सीरीज। मेरा नाम खुर्रम है और आज का जो वेबिनार है वो मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया शब्बीर, जो मैनेजर प्लेसमेंट सेंटर है नुमल की, एनयूएमएल की, इस्लामाबाद की। और उसके अलावा एक जो सेकंड स्पीकर हैं वो है सबाहत बुखारी, जो डायरेक्टर हैं जहाज में डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। और वो जैसे ही हमें ज्वाइन करती हैं हम उनको भी उस पर ले लेते हैं पैनल पे। आज का टॉपिक आज का टॉपिक है जी, हाउ अ स्टूडेंट कैन यूज टाइम ऑप्टिमली। टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स चैलेंजेस आते हैं, हम बात बार बार करते हैं। हमने अब पूरी सीरीज वेबिनार की जिसमें हमने कहा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की, हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर बात की। हर सेक्टर में, हर वेबिनार में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपने अपने आप को कैसे यूटिलाइज किया जाए। एक बड़ी टर्म हम यूज करते हैं कि हाउ हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एक बड़ा टर्म है कि कोई चीज हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई इंडस्ट्री हो, कि जी इसमें से बेस्ट आप कैसे चीजों को ले सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट या ऑप्टिमल यूज ऑफ टाइम क्या है? एबिलिटी टू यूज टाइम इफेक्टिवली एंड स्मार्टली। आप अपने टाइम को इफेक्टिवली और स्मार्टली कैसे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। और ये ऑप्टिमल यूज होता है टाइम। ठीक है। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो पहले स्पीकर है हमारे साथ, जवेरिया इज एन एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, रिसर्चर, ऑथर एंड herbal consultant with 14 years of experience in diverse industries such as education, arts and entertainment, to engineering firms, 10 years of pieces of training and volunteering for students. So a complete comprehensive experience है जवेरिया का। जवेरिया, welcome to ASK webinar series. Thank you very much. जवेरिया, नाउ हम फेसबुक पे लाइव हैं, हमारी ऑडियंस हमारे साथ है। और आज का जैसे टॉपिक था, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे भी हम बात कर रहे थे कि हाउ अ स्टूडेंट कैन यूज टाइम ऑप्टिमली। टाइम इज एवरीथिंग। और स्टूडेंट्स के लेवल पे थोड़ा ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि इन्हीं लोगों ने आगे जाके इंडस्ट्री में जाना होता है, और टाइम मैनेजमेंट पूरी जिंदगी है, इन्होंने आगे दूसरों को सिखाना है। तो इसके ऊपर क्या आपकी क्या टेक है? Actually, you're so right. जब हमारा टाइम मैनेजमेंट कहीं फॉल्टर करता है तो बेसिकली हमारी पूरी लाइफ की जो जितना भी सिस्टम गोइंग टू बी विद देम, faltering the time will be with them for life. So अगर इसको अभी से आप सेट करते हैं और अब अगर आप अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, तो यू विल बी अचीविंग ऑल योर गोल्स इन योर फ्यूचर एज वेल. सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट लाइक हम लोग इसको समझते हैं दैट इज वी कैन डू इट, वी इट इज अ कॉमन सेंस, बट एक्चुअली common sense is then again not so common. So it looks very very simple. It looks like acha, we know that, we also know that, but are you actually implementing that? So knowing is not everything, implementing is also very important. So I think मेरा टेक इस पर ये है. ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज लेके जाएं कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो जरूरी हैं। मतलब ये तो हम लोग उसकी बात करते, डेफिनेटली वेदर इट्स बड़ी बेसिक सी चीज है कि टाइम ही तो है। मतलब अगर हम मतलब जो चीज सबसे ज्यादा जो पैरिशेबल चीज है, जब हम बात करते हैं, पढ़ाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, तो हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पैरिशेबल, नॉन पैरिशेबल आइटम्स। देयर आर पीपल जो कहते हैं जी पैरिशेबल आइटम्स के ऊपर बिजनेस ना करें आप, इसलिए कि वो खराब हो जाते हैं। टाइम तो सबसे ज्यादा पैरिशेबल है, चला जाता है, टाइम कभी वापस नहीं आता। टाइम गया, दैट्स इट। तो अगर हम इसको, जैसे हम एक अगर सेट पैटर्न की बात करते हैं कि जी कैसे स्टूडेंट्स अपने टाइम को अच्छी तरह यूज करें, तो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या अगर बुलेट पॉइंट्स में अगर बताना चाहें जिसको स्टूडेंट्स नोट करें। हमारी ऑडियंस है, फेसबुक पे भी है हमारी ऑडियंस, है चैट में, इसमें भी मौजूद है। तो हम किस तरह उनको गाइड करें, व्हाट दे आर सपोज टू डू, कि जिसमें उनको मतलब क्या वो ऐसे एक्शंस लें, क्या हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं कि जिसको अपने वो ऑप्टिमल यूज करें अपने टाइम को, व्हाट दे आर सपोज टू डू। जी एक्चुअली जी फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट their values are. ठीक है, पहले तो आप देखें कि what your values are, then you need to understand what your goals are, then you need to prioritize your goals. ठीक है, schedule your time, and then you have to evaluate and realign. ये ही वो सब steps हैं जो आपने करने हैं. This is actually the thing, but this is actually the thing we are not doing. We may be faltering in step second, step third. We are not understanding what our values are, actually what we need to do, where we want to be. I have a little presentation on that. If Sure. you let me start Yes, that please, presentation. please. Okay, okay. I'm sharing it right now. It will be a minute or two. Is it visible? Yeah, it's visible. Okay.
Okay, Ji, this is basically, there will be some time management strategies which I will be sharing with you. So we have talked about what is time management. Basically, when you are using your time productively and efficiently and effectively, you are basically managing your time well. I'm not going to waste your time much. There are some dimensions. You have to set goals. This is the answer of the question you just asked. This is the answer of that question. What are the different dimensions? What we need to do? So we have to, first we have to understand what are our values. And then we have to set our goals. We have to prioritize work. Why we want to set goals, I will explain in a minute or two. However, we have to prioritize what we want. Students, unfortunately, prioritize their social media time just too much. So we are going to talk about that. We have to define time limits, organize our resources. That is also important. Or when we are planning, we forget to understand what type of resources we also need to make sure that we have the time, and we have the time limit, and in that time limit we can do our work. Say for example, if you're sitting and you want to do an assignment, you're forgetting about the electricity, you are forgetting about the timings of electricity. Just as an example, I'm telling you, you forget about the computer time, maybe you are sharing that. So you have this time frame in your mind in which you forget to organize your or resources as well. So this is something students are missing in their whatever time management plan. So delegate work. If you have some time of activities which are not on a high priority list to you, you can also delegate to someone else. Little requests which are done by other people's for you, you can delegate that, give that to someone else, outsource it. So, and reduce redundancies and avoid stress. Basically, what time management is giving you is that it lets you be calm and less stress free. So you really you get all the benefits from setting goals and to your realigning your whatever your activities are. So why actually time management is important? We have to increase productivity. Students may ask, okay, I'm today I'm giving my time to this webinar. What will I get? You will get that the best thing right now you are going to get is to understand that time management is going to reduce the stress in your life, the anxiety you are feeling right now. I think right now, just think of it. Maybe you are thinking, okay, I'm sitting here and I have to do a certain thing, a certain task. What is actually happening that you even are not aware? Unconsciously, it is adding to your stress level. It is heightening your stress levels. So give yourself a check. It improves your self-esteem. How time management is going to improve your self-esteem? It does. It gives you a balance in your life, a routine, a calmness. So it adds to your personality. Why don't you think about those teachers of yours, or maybe the colleagues, right? Who are good at time management. They're always in a balance. They have a nice posture. They are in a good mood. So it really gives you balance in life as well. Otherwise, we all know, you can see that there are some time management tips. I don't think so any one of you have no idea about them. You know that you have to create a proper to-do list, track your time, focus on things, identify the wasters, and cut ties with the distractions. But do we do that? No. We are too nice and we don't want to say no, which is a time waster for yourself. So, so I'm going to tell you later, increase self-confidence, improve self-image. Self-image is a very big part of your confidence, how you see yourself, not other people. Forget about other people, how you see yourself right now at this moment. Just analyze yourself. If you are the kind of a person who is always late, then I think that one part of your personality is daunted because of this only one thing. Maybe it's your class, maybe it's in an occasion, wherever, right? So there are some myths that time management is nothing but common sense.
If I'm doing good in my class, I'm a good student, this means I must be managing my time. But are you in a balance in your life? Are you managing your time properly for your family, for your friends, and for your studies? Are you sure? Now it is the time to evaluate yourself today. Evaluate yourself right now. Evaluate yourself. Are you managing? If you're a good student, you are managing your grades well. But this is that what we give too many points to only one task, and we think we are managing our time. So this is no good. As a professional, we all handle meetings and contingencies and all that, and we are late. But again, the next day, are we doing the same thing, same pattern? Yes, we are doing the same pattern, because we all have time, and some people do tackle that time because we are using some strategies. So we will be talking about those strategies. So some people say, okay, time management, I don't need time management, I work better under time pressure, right? Pressure. So that is also wrong. You actually, there is no other choice, so you have adopted to work like that. And at the end, your work, okay, you can do your work, you have the outcome, but what about your health? You are suffering, your health is suffering. That is very important to understand today, because later I have seen many students suffering from ulcers and all those things like that, and you are not aware that how your mental stress is affecting your physical health. So this much important is your time management. Okay, and then another waster, that social media. I'm going to just look at the social media, and in a minute or so, it will be all right. But that's not the end. After 1 hour, you wake up and you are like, okay, I have now so little time. Okay, I'll do it. You tell yourself because you don't want to hurt your own ego, but that is a disaster as well. So if I've already told you that what are the basic things you can do to manage your time, is set goals, get reasonable expectations, right? No one's is perfect. We want to do an assignment until it is perfect. Just do your assignment effectively. First, you have to be effective. Do your work. You can do all the makeup and cosmetic changes later on. You can do that later on. So make a schedule. Okay, tell me, do you reach your class or office on time? You assess yourself. You have a whole month. Assess yourself. Sometimes you are 2 minutes late, sometimes you are 5 minutes late. Actually, what you are doing is that you are thinking, okay, I'm managing my time. No, you're not managing your contingency. That 15 minutes should be a contingency time. Whenever students are applying somewhere, or maybe my colleagues are applying somewhere, we have to reach somewhere. When we get professional, we know that we have to be there 15 minutes before the event. Why? Because you need time to feel a balance in yourself as well. When you are somewhere on time, that is not an achievement. You should be there before time. So you can make sure that you are okay. You know the place, you know your surroundings. This is very important, right? So if you are doing well, good. If you're not doing well, revise your plan. Now, whatever I'm saying, you know that, don't you? But are you thinking about it in a very, very practical way? Do you reach somewhere 15 minutes before to your interviews? Maybe it is a strategy to be good at your interview. If you are reaching there before time, give yourself some time. Try it next time. This is something very practical. This is something practical we have learned with time. We have checked it. Be somewhere 15 minutes before and see how confident you are. And look out for the people who are, running towards that space in a hurry. They are not, very confident in their interview because they know they have faltered somewhere. So try this in your classes. Be on time. Just give your 15 minutes, contingency time before everything. Just move your mental clock 15 minutes earlier and see what nice things are going to happen. Some people think, especially students, we are on time always. Why? Because the bus is coming and getting you. Do it yourself. Think, today if I have to go by myself, what will I do?
And then you will realize, okay, I have a plan. No, you don't have a plan. So you really need to see that. So revisiting your values. What is now, if you are doing anything in life, it all depends on your values or how much importance you give to that your whatever activity or chore you are doing, task you are doing, that is important. So first check out what, as per your criteria, what is the value. Let's do a little exercise right now. Okay, think right now, think in your mind 5 things most important to you. It can be your college work, school work, whatever, university work, or your own professional work, or you something you need to be doing in your life, personal life, academic life, career. Just list it 5 things in your mind. The first thing, keep that, cut the all other things. You need to be doing that one thing right now. This is how we prioritize our values. We have, everything is important. Having a cup of tea with your friend is important. That is personal life. But you cannot mix it or give priority to the urgent tasks, right? So you need to understand 5 things. Those all 5 things are very important to you. But the first thing you will be doing first. And you are ignoring that first thing because of maybe you think it's such a huge task or whatever it is. Just kill that first one thing and you will be having a very easy task, and that is as per your value. You will have a peace of mind and calm after that. Maybe it's just a next class assignment, maybe it's just a report you have to write, but this is the thing, there's no other way around it. So okay, where to start? Okay, let's, today I'm just woke up and I want to say today I want to start my new life where I will be managing my time well. So if it's day one, what will you do? You have to come up with the goals which are specific, doable. We all know SMART goals and all that, but these are the two specific and concrete work. You need to do that. Why? Because you don't want to go around here and there and then you are into so many other things. Long term and short term goals. Please have long term and short term goals. Think about your year and what is your deadline, what's the time you have for a certain goal, and then decide, right? And integrate your goals of your personal life, your academic life and career. Check out what is most important to you, why, what will be the outcome. That is going to motivate you to be more managing your time. Okay, just thinking, okay, say for example, some people will tell me, or some students are going to tell me, when I'm on social media, that is also important for my life. It is for us too, it is for everyone. But you need to understand, this activity, is this activity urgent to me? Is this important to me? Other than the assignment, who is going to contribute in what way to my life? You have to think that. That is going to motivate you. Okay, so we are coming towards the priorities, right? What are the priorities? What is important and what isn't? In what order we need to do things and be done? If you are professional, just think what you want to achieve in a year. If you are professional, for example, it will be after a few days, it will be like new year. So we will having a lot of new year resolutions. So how many have you achieved actually this year? Think about it. So you need to plan a year, a quarter, a month, even days, and even when you are managing yourself in a professional way, you really need to see where your hours are going on a working place, on your working place. And if you are a student, once you know that what your priorities are, you need to plan a schedule. It can be on a daily, it can also be on a semester wise, weekly, because you need to understand what is your deadline for a certain project. Okay. So you really need to see. So if you're a student, how will your semester will go by, and how you can have a semester calendar
and you can book. These are some practical strategies for you. You can want to take a screenshot or whatsoever. So block all important set time obligations. What are the important setting time obligations? Because in academic, you need to understand when your quiz is, because if you don't know the right quiz date, you know the actually when it will be a week. So block that time, block that study time for you. Block all the classes and lab times, because when you're looking at your calendar, when we are looking at your Google Calendar, maybe you're using that, we don't block time. We give that time to ourselves unconsciously. It looks like we have all day. You don't have in actuality all day. You have just a few hours. So or very wisely do that. So divide the schedule, note all the time and deadlines for the activities. That is very important. We forget that. We mark our work. We don't mark when, until when, what time it should be done. We don't think about in that deadlines. Okay, not, we forget about it. Exams highlight what are the project due dates, quizzes, midterms. We just, okay, this is the midterm, this is the date, and done. What is the deadline? You have to be preparing before that, not the last moment, 2-3 days. Most of the students think 2-3 days are enough for us. That is nothing. That is like you are just getting by life in a very mediocre way. You can achieve so much through your time management. There's always a time if you are dividing your time for your friends, family. So one tip for professionals is which I use sometimes myself is, and it's very practical one, is that that we have a lunch hour. So you also have a lunch hour. Say, so I try to take my lunch 15 minutes or 20 minutes if possible before my lunch hour. So I delegate my extra 30-40 minutes every day to task which I want to do, to the, or to maybe the pile up tasks. So I'm able to cover everything. And at that time, there are no colleagues. I sit back, I have this my me time with me, and I'm okay. I enjoy my time. Yes, you can do that twice a week. You can do a thrice a week if you want to socialize. There's always a time for socializing afterwards, or maybe if you want to socialize with the lunch time, or you can do that. So you need to be practical about it. And that is not rude. That is not antisocial behavior. That is your time, your me time, your development, self-development time, which you are allocating to yourself. If you are in a crowded place, please find a secret hideout, a place where you know that there will not be many people, and it's not rude. It's not rude. Because what we think because our culture that being together every time is okay in a university or in a career path, but it's not. You are also an individual. Don't forget that you are also an individual. But you also need your time for your sanity also. So when you're organizing, please don't set unrealistic goals which you cannot come up. I'm going to finish 2 chapters today, or I'm going to finish this whole report today, because at the end you will not be able to do that. That is, nobody's perfect, and if you are allocating a wrong timeline to a work or activity which is not there, you will be sparing time to a lot of activities which will not come out as very productive, and you will fail yourself in the process. So also spare time for the review, because when you are working on a project or you don't give your review time. We forget that. It's a little tip from me that also allocate time for the review, which we don't. You're writing an assignment, 1 hour is the time. You don't ever give it a review time. You don't review it. Okay, 2-3 minutes are enough. No. So it's up to you. How can you manage it? But always, after all activities, give a review time. Okay, so, and also manage your study into manageable chunks. Don't study, just give 4 hours study time. It is not even productive as per research also. Okay.
So you really need to understand this is how you manage. We all know this is the yearly calendar, but I'm just putting it here to so that you to tomorrow you should think about it. You like this one, maybe you can come up something like this, and maybe for on a daily basis or weekly basis you can use something like this. Okay, now this is basically a way with which you can actually understand what work is important and what work is not important. We have 4 dimensions here. You can copy it or you have take a screenshot from there, that something is urgent and important. Do now. Now, put all your activities as per the value, as per you value them over there. And then there is something which is important, but it's not urgent. You can plan to do, but write down tomorrow, write down your things in these dimensions, and you will be surprised at how easily now you can manage your time. So some are urgent but not important, like somebody's coming to you in offices or in that I want a certain thing, I want a certain book, want a certain notes. It's not important as per your value. It can be done, or maybe you can tell them to, okay, maybe the other person can do that because you have a time to manage. Somebody's coming with a cup of coffee with you and saying, okay, let's have a cup of coffee. You are working on an assignment. That is really not rude to tell someone that, okay, I'm working on an assignment that is important to me. If they will be nice people, if they will be your well-wishers, they will understand. And if they will be a time wasters, because people are time wasters, your some friends will be time wasters. You might think, okay, maybe I'm telling you to be rude, but it's not antisocial. It is actually managing your time, right? And it is because of a cultural thing that we don't say no. No is very important in life. No is very important in life. So comfort activities like surfing, gossiping, daydreaming, doodling, that you can really adjust because that is not urgent, not important. However, they are there and you cannot negate. Don't try to stop what you like because that is a part of your personality. However, please allocate time for that. Don't stop if you like texting, social communication on social media, Netflix. Why would you stop that? That is a part of your life, your personality. It is a part of your personality. This is Yeah. how you are developing yourself. Why would you जवेरी be इसको खाला बुक करें इसलिए कि दूसरे भी हैं तो उसको खाला समअप कर लें ताकि okay? कुछ टाइम आ जाए टाइम नहीं बच जाएगा. Okay, sure. Okay. So you can always get back to me. I'll just end my thing with the procrastination cycle, which is that I don't do anything. This is a cycle which we have when we were telling ourselves, okay, I had so much time and I didn't do anything. So what happens that you feel like that you are not enough, you're helpless, and then you are thinking, okay, I'm the culprit. I'm I'm not I'm not the victim, but I'm basically you're not the victim. You are doing that. So there is always a yes and no thing. There are some productivity tools which you can use if you really want to use. You can use some productivity tools from this net, which help you to stop or block the social media websites for you for a certain time. Use that. So at this note, I'm going to end today's presentation and hope it was helpful. If you want to know more, you can always contact me. Thank you very much. ग्रेट जवेरिया, एक्सेलेंट आपने बहुत सारी चीजें कवर की. अब मैं हमारे सबाहत हमारे साथ मौजूद हैं. आप जवेरिया स्क्रीन उस पे कर दें, क्लोज कर दें ताकि हम उस पे आ जाए मेन पे. जवेरी सबाहत बुखारी हमारे साथ मौजूद है. सबाहत प्लीज अपना माइक और स्क्रीन ऑन कर दें. जवेरी आपको ये शेयर स्क्रीन जी मैं कर रही हूँ. अस्सलाम वालेकुम सबाहत, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल. Sabahat Bukhari, Director of Diversity and Inclusion in Jazz. Sabahat is an experienced organization development HR consultant with over 2 decades of practical demonstrative expertise. ऐसा profile है, very interesting profile. Sabahat, first of all, welcome. आप इसके webinar series में आज जैसा बड़ा interesting topic है, how student can use time optimally.
जवेरिया हमारे साथ थी जो मैनेजर प्लेसमेंट है एनुअल में, और जवेरिया आप हमें बताएं, आप गाइड करें, आपका क्या टेक है इसके ऊपर। टाइम मैनेजमेंट बेसिक चीज है स्टूडेंट्स के, हम आज बात कर रहे हैं स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी बता दें इसलिए कि आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में बैठी है, 20 ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है। एचआर तो है ही है, बट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इस टाइम मैनेजमेंट उसके बगैर नहीं होता, तो प्लीज हम आपसे सुनना चाहेंगे। Sure. Thank you so much, Ask Development Khurram and Javeria. It was very informative discussion that you have shared. Disclaimer, I am not a very well managed or well organized and always on time person. And despite that, I have achieved what I have achieved. So there is a light at the end of the tunnel. कितने जीनियस होते हैं लोग जो लेट आ रही, बहुत मीम्स होते हैं ना जो लेट आते हैं जीनियस होते हैं, तो आप यू दैट पार्ट ऑफ This is part of life. We are not clocks. And everyone, all the students here, I have 2 teenagers at home as well. And I believe that expecting, and I'm talking to all of you here, expecting that I will always be on time and I will be the clock master and I would always be able to control my times is expecting way too much from your own self. And I'm saying it because no matter how many theories exist, no matter how many platforms exist, no matter how many frameworks exist, we know that one thing that is uncertain, and that is human behavior. और जब human behavior हर एक का different हो सकता है, तो not everyone can fall under the same definition of very accurate on time. But is the definition of time management a continuum, or it is yes or no? Can I be on the both extremes only कि या तो मैं extremely unorganized person हूँ, ना मैं कहीं टाइम पे पहुंचती हूँ, ना मैं कुछ, कोई भी चीज मेरी जिंदगी में बैलेंस नहीं है, या मैं टाइम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती हूँ. Because time is for our benefit. We are not the slaves of time. And time is also required for us to make the best out of the situation that we have. So हर कोई शख्स जो सोचे यार ये कहानियां तो बहुत अच्छी लग रही है, पर उठूंगा तो मैं कुछ करूंगा ना, और या फिर ये कि टाइम से जो है वो आँख खुलेगी, मेरा तो आज सारा दिन बेकार हो गया क्योंकि मैंने 8 बजे उठना था लेकिन मैं 9 बजे उठा. So that's not the realistic expectation as a student, as a human being from us. तो ये तो सारी बात ही उल्टी हो गई. ये तो हमने आज साहब ने मुझे कहेंगे सबात आपको हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए बुलाया था, आप तो टाइम मैनेजमेंट के खिलाफ कर रहे हैं. नहीं योर पर्सपेक्टिव, और जो आपने बात की ना कि मतलब इसके ऊपर आते हैं कि एक जर्नल है कि जी यू हैव टू बाउंड, आपने करना है रिलीजियसली, आपने फॉलो करना है, 5 वक्त की नमाज एक है, कहाँ पे जहाँ पर राइट टाइम है वहां यूज करना. इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एक्चुअली. So what is actually the time management? That's very important for us to understand. And I believe that this definition will help you into managing and organizing your life as well. Time management is that I be the best person at the best time. That's what time management. टाइम मैनेजमेंट ये नहीं है कि 5:01 के बजाय 5:01 और 30 सेकंड पे काम हो रहा है. That's organization. That's organizing yourself. It is part of being the best person of you. It is not the whole you. So time management का मतलब एक organizing है, 2 अपने बेस्ट प्रोसेसेस को ऐसे अपने आप के इस्तेमाल में रखना that you are not anxious. अगर आप टाइम मैनेज करने के चक्कर में मजीद एंशियस होते चले जा रहे हैं and you are becoming someone who people cannot accept, then you are not managing the time. You are becoming a wall clock, and that's not who you are. You are a human being. So time management या organizing skills is a skill set जो कि organizations को चाहिए होता है when you come on that. And what is the right and the best way to learn it, or best part to start executing it, is the time when you have right now. It does not mean that me at 41 years of age cannot expect it or cannot correct myself, but that means that the right stage to do is when you where you are right. So अब सवाल ये पैदा होता है कि जी प्रैक्टिकली क्या हो रहा होता है, कॉर्पोरेट में क्या हो रहा होता है.
There are, as I said, that there is one skill that is called as organizing skills. Organizing skills mean that you are credible. क्रेडिबल का क्या मतलब है? अगर आपको 5 बजे कहा जा रहा है, 4 बजे कहा जा रहा है, 3 बजे कहा जा रहा है, then you're there. Your presence is there. Second credibility comes with, if you are to meet a deadline, you are meeting a deadline. You're not asking here and there, and not everyone will be running behind. And the third most important and practical skills of organizing is that nobody should be following up on the tasks that they have given to you. These three things make you a credible organizational person. और इसके लिए आपको अपने टाइम को मैनेज करना होता है. सो यू हैव द आउटकम दैट यू वांट टू रीच इज योर क्रेडिबिलिटी, एंड योर क्रेडिबिलिटी कम्स विद दैट यू से, if I have to reach at this time, I will reach on this time. If I am saying that I will meet the deadline, I will meet the deadline. If you're coming on meetings, you're coming on time. You're on time in the office. Nobody has to follow you up. You follow up with your things that you say you do. इस तक पहुंचने के लिए you have to consistently make some habits. And few habits that Javeria has shared here is कि आपने सबसे पहली हैबिट अपनी ये देखनी है कि मैंने काम अपना टाइम को कैसे, डे जो मेरा 24 आवर्स है, इसको कैसे एलोकेट करना है. सो दैट्स वन पार्ट ऑफ द हैबिट. अनदर पार्ट ऑफ हैबिट इज हैबिट मेकिंग. वैसे जब मैं सुबह आप लोगों में से अब थोड़ा सा इंटरेक्ट करती हूँ और आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए होगा, मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो सहर खेज हैं या जल्दी सुबह उठते हैं. रेज योर हैंड्स. एटलीस्ट मैं तो. There are people. Say, good. So that means that you have already conquered your day if you are a सहर खेज. ठीक है, सहर खेज का मतलब होता है सुबह जल्दी उठने वाला. सो अगर आप 7:30, 6 a.m., 5:30, 4 a.m., whatever, if consistently day in day out, regardless of your chutti, regardless of any time, you are habitual of maximum wake up time आपका ये होगा, you have conquered your day. सो जो एक मिथ है कि जी मैंने 5 बजे ही उठकर अपना डे कॉन्कर करना है या 4 बजे ही डे उठ करके कॉन्कर करना है, उसके बजाय व्हाट कॉन्कर्स द डे इज योर हैबिट. और ये जो बात है कि जी 4 बजे उठ जाते हैं तमाम सीईओज, 5 बजे उठ जाते हैं तमाम सीईओज और वो सबसे काम करना शुरू हो जाते हैं, दे डू इट बिकॉज दे हैव मेड इट अ हैबिट. They could have made the habit at 7 a.m. as well, and that 7 a.m. is the habit for them. So whatever works for your life is your habit. But नमाज पढ़ी आपने, उसके बाद आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया. ठीक है, अब उसके लिए आपने क्या हैबिट प्रिपेयर की है. सुबह 4 बजे तो मैं उठ गई, 5 बजे आजकल उठ गई, उसके बाद क्या करना है. What is there that I will conquer so that my day is going good? You should be doing something that you hate doing. That should be that you hate doing. Hate. Okay. That should be the first thing that you should challenge yourself. Okay. Challenge yourself. The first thing in the day should be the ugliest thing that you don't like to do. If you want to get successful, there is a phrase called as eat that frog. And you have to eat 2 frogs, eat the ugliest one first. This means that do the task which you are actually trying to avoid. जब आप ये काम सुबह उठते ही कर लेंगे, then don't even ask कि मेरी procrastination कहाँ गई. Because procrastination is basically a reaction of your brain to avoid the fear. Procrastination is our psychological way of handling our fears. मेरा दिल नहीं चाह रहा करने का. क्यों नहीं चाह रहा? जरा सा उसको dig in करेंगे तो पता चलेगा you don't like doing it. Why you don't like doing it? Because you don't like that subject, you don't like the teacher, you are not into the phase in the mindset of doing that assignment, so on and so forth. All these things go back into the root of fear. अगर आप इस fear को conquer कर लेते हैं, procrastination will not come to you.
So I would be saying that entire of your routine, entire of your baseline is based on how you conquer your day, how you organize yourself around the 24 hours that you have. That's the time management. बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि मैं हर जगह टाइम पे पहुंचता हूँ, इज द टाइम मैनेजमेंट. दैट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट. सो मेकिंग अ कंसिस्टेंट क्रेडिबल एक्सपीरियंस ऑफ यू विद पीपल इज व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल. मैं यहाँ पर एक कमेंट देख रही हूँ, देयर इज वेरी इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. But yes, this has made our life so easier and even confused. This has changed our whole working. No routine is being followed almost. Physical conditions are going to be deteriorated. It would be helpful if you can highlight or little focus on it. How it is to be managed. बिल्कुल सही है. So सवाल ये है कि जी अब तो इतनी distraction है, how do I manage it? And that's what I said. What is it that you don't want to do? Do that first. Instead, what we are doing is what we find easy. That is, फोन साइड पे रखा हुआ है, सुबह उठते ही सबसे पहला काम फोन हाथ में. If you're starting your day with an electronic device, you're gone. Avoid the electronic device in the morning. अब आप बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी मैं तो कुरान पढ़ने के लिए अपने फोन उठाता हूँ, प्लीज गेट अ फिजिकल कुरान. ठीक है. Find to have some connect out of electronic the first thing in the morning. There you conquer the day. मैं इस बात को बिल्कुल नापसंद करती हूँ और मेरे पास 10 बहाने होते हैं कि मैं किस तरह से जो ना वो सुबह उठते सबसे पहले देख लूँ कि ट्विटर पे पहला मैसेज क्या आया हुआ है, या मैं देख लूँ कि फेसबुक के ऊपर क्या हुआ है, या व्हाट्सएप के ऊपर क्या हुआ. नथिंग विल चेंज. मैंने एक दफा छुट्टी कर ली तमाम सोशल मीडिया से, इंक्लूडिंग ईमेल. बिलीव मी, पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा रहा, दुनिया भी वहीं की वहीं खड़ी रही, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो मैं अगर ना जानती तो कुछ नहीं होता उसका. सो दैट्स अवर हैबिट. अब उस हैबिट को खत्म करने का क्या तरीका है? ऑल ऑफ यू दोज हु वेक अप इन द मॉर्निंग, make sure one thing, at least one small step will change your life. Do not charge your phone around your head. अपने सराहने फोन को चार्ज पर मत लगाएं. If it would be there, you will get to it. Make it an uncomfortable habit that while you are going to sleep, रात को ये किसी और कमरे में लगा के सुन, क्योंकि फिर आपको वहां तक उठ के जाने का जो मूड चेंज होगा, you will be doing something else. Very small step and practically possible as well. Number 2, do a physical exercise in the morning. अब वो फिजिकल एक्सरसाइज सबसे बड़ी मुश्किल है. ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी. मेरी तो जिम की एक्सरसाइज नहीं है और मेरे घर में जगह नहीं है, और मैं जो वो फिजिकली उठना पसंद नहीं करता, या मैं लेजी हूँ, या मोबाइल को ऑफ करने की जरूरत नहीं होती यार. मोबाइल को यहाँ से ऑफ करना होता है बस. देखें, सब जानते हैं जिस कॉल को हम अटेंड नहीं करना चाहते हमारे सर पर भी बजती रहे, हम नहीं हटाते. इज दैट राइट और नॉट? ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर अपना नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने नोटिफाई कर लिया कि सीन है कि नहीं. ऐसे तो इसका मतलब है, इफ यू वांट टू इग्नोर द मैसेज, यू कैन इग्नोर द मैसेज. इट्स इन योर कंट्रोल. You are ready to give up your control when you say कि भाई मोबाइल को ऑफ कर दूं मैं. That's not your control. That तो मोबाइल का कंट्रोल हो गया. आपका कंट्रोल ये है कि मेरे सामने पड़ा हो, मैं ना उठाऊं. So make a data. Those who are living in hostel, अपने कमरे में एक ऐसा पॉइंट बना लें जो एटलीस्ट आपके बिस्तर के पास हो. बाथरूम में चार्ज कर लें यार, नहीं होता गीला, कोई बात नहीं. ठीक है. The whole point is that keep it away from you and make a cut-off point after which you are not using it. Difficult है, doable है, लेकिन उससे जो फवायद हैं वो ये हैं कि कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल, अच्छा जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं है, आई वुड लाइक टू इनवाइट देम इनटू द कॉन्वर्सेशन एज वेल. व्हाट पार्ट ऑफ दिस विल बिकम इम्प्रैक्टिकल?
फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि यार 11 बजे इज माई कट ऑफ टाइम वेयर आई विल नॉट, आफ्टर विच आई विल नॉट यूज इट। तो मैं 11 बजे के बाद क्या करूँ? व्हाट इज माई स्लीप टाइम? इफ यू आर एन अर्ली राइजर यू विल स्लीप अर्ली. If you're not sleeping early, you will not be able to be healthy. And you will always be, shifting the blame to the device. Ki I'm not doing it because I'm busy here, because I'm busy here, because I'm busy here. Start of the day, define what you do the whole day. जैसे ही जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में आती हूँ, मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं ऑफिस जब आती हूँ, ऑफिस में आने के बाद, और ये बारहा आजमाई भी बात है, अगर मैं ऑफिस में आते साथ ही ईमेल चेक कर लूं तो मैं सारा दिन सिर्फ ईमेल्स के जवाब देती रहती हूँ। और अगर मैं ऑफिस में आने के बाद जो मेरा यूजुअल टाइम है ईमेल चेक करने का या जवाब देने का, मैं अगर उस पर करूं तो आई हैव अ वेरी मैनेज्ड डे। तो आप मुझे ये बताएं, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये तो ईमेल आई, ये तो ईमेल का तो जवाब फौरी तौर पर देना पड़ता है। एंड दैट्स अ मिथ दैट वी नीड टू ब्रेक। एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल क्या है कि ईमेल का जवाब विद इन दैट क्लोज ऑफ बिजनेस दे दिया जाए या एटलीस्ट 24 आवर्स में एड्रेस कर लिया जाए। बट अगर ये अर्जेंसी होती तो यू वुड बी अटेंडिंग द फोन, यू वुड नॉट बी अटेंडिंग द ईमेल। सो अभी मिस जवेरिया ने आपको बड़ा अच्छा बताया है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का जो चौखाना बना हुआ है, उसमें आप देखें अर्जेंट क्या है। क्या emails are urgent? No email is urgent. Even इस उसके ऊपर आप urgent लिख दें, because urgent is कि अगर आपको urgency है तो ये बचेगा, ठीक है। ईमेल लिख रहे हैं तो the person knows कि at least 4 hours, 5 hours, 8 hours और 24 hours आपके होंगे, तभी तो वो ईमेल करके वेट कर रहे हैं, चाहे वो उस पर अर्जेंट भी लिखते। अगर अर्जेंट नहीं होगा तो वो कॉल कर ले, जिसको अर्जेंसी होती है वो कॉल कर लेता, मैसेज कर लेता, व्हाट्सएप कर लेता है। देयर सो मेनी वेज। सो आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है? स्टूडेंट्स के लिए अर्जेंसी क्या है? डिफाइन योर अर्जेंसी, डिफाइन योर सेल्फ। मैंने सुबह उठ करके क्या कर, मैंने ऑफिस जाना, मैंने स्कूल जाना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, लेट्स से कितने बजे, 9:30 बजे, 8:30 बजे, 7:30 बजे। उससे बैकवर्ड मैंने कितना अपने आप को लेवरेज देना है कि आई कैन डू द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द मॉर्निंग। दैट्स द होल गेम। अगर आपका मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फिजिकल एक्टिविटी है तो दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू शुड बी डूइंग। मेक योर हैबिट अराउंड इट, एंड एवरी हैबिट इज मेड within 21 days. So your time management is just a decision and 21 days away. और अब आती है मेरे जैसों की बात, हाइपर अटेंशन डिसऑर्डर्स, जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और जो एक वक्त में 6 काम करने के आदी हैं, जिनके आप टैब्स देखें तो 15 टैब्स खुले हुए होते हैं, या जिनको हर वक्त जल्दी काम करना होता है और अर्जेंसी हर चीज की सवार होती है, और उनको लगता है कि वो एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते, इस वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उसका तरीका भी है, हर 5 मिनट के बाद नया काम शुरू करना। गिव 5 minutes विंडो टू यू। उस 5 मिनट विंडो के अंदर वो काम जरूर करें जिसको आप इरादा। दैट अगेन इज फॉर्मिंग द हैबिट। My advice to all the students and to all the practical people who are doing the work, students are also practical, but they have so much leverage. But even the students and all the professionals, make habits. If you want to follow the time, if you want to control your time, you want to organize your time around the clock, you want to be on time, you want to be considered as a credible person, make habits. Because habits are what going to take you forward. अब वो हैबिट क्या होती है? वो हैबिट होती है मैंने सुबह कितने बजे उठना है, मैंने कौन सा काम सबसे पहले करना है। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ किसी ने न्यूज़पेपर लिखा है, वेरी गुड एग्जाम्पल। Start your day with a newspaper reading.
बिल्कुल आराम से बैठ के. The day you start conquering these things, you will see yourself that how can I organize myself. अब आती है बात कि मैं अपने आप को पढ़ाई के लिए कैसे करूँ. ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि मैं डेडलाइन नहीं फॉलो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उनके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस ये है कि डोंट गिव योरसेल्फ डेडलाइन, बिकॉज डेडलाइन एक्चुअली गिव यू एंजाइटी. And because of that anxiety, your defense mechanism is procrastination. Number one. Number two, ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि मेरी ये डेडलाइन है, तो यार मैं तो बहुत ज़हीन हूँ, मैं एक दिन पहले बैठूंगा काम खत्म कर लूंगा. तो they keep on procrastinate. Deadlines are the evils. Deadlines की जगह क्या करना चाहिए? हमें तो हर चीज की डेडलाइन मिल जाती है, हर असाइनमेंट की डेडलाइन होती है. What about prioritizing things? Instead of Structure. 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 So the prioritization, structure. Come out of the deadline habit. When you are in the deadline habit only, then you are chasing your fear and you will procrastinate. If you structure, you will not procrastinate. अब वो कैसे structure करें? Structure करने का तरीका ये है कि आप अपने आप को ये बताइए कि मेरे लिए प्रायोरिटाइज क्या कर रहा है, और फिर अगेन प्रायोरिटाइजिंग में eat the frog. Prepare the subject which you hate the most. You will give yourself a deadline, and that deadline will be based on your habit. So, छोटे changes will result into you as an organized person. Time management is all about how organized and credible you are. बाकी सारी चीजें जो है ना वो इसके तरीके हैं. सो मेरी 3 कंक्लूड करूंगी. नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार मैं एक बात कहती हूँ, ईट द फ्रॉग. एंड इफ यू हैव 2 frogs, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट. और ईट द फ्रॉग का मतलब ये होता है कि सबसे मुश्किल काम जो आपको पता है कि मैं इसको टालता हूं, सबसे पहले वो सुबह काम, सुबह उठते ही सबसे पहले वो, नंबर 1. और इसी तरीके से अगर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट की तैयारी करें जो सबसे मुश्किल लगता है. अगर असाइनमेंट है तो सबसे पहले उस असाइनमेंट को करें जो आपको सबसे मुश्किल लगती है. नंबर 2, डू नॉट चेज द डेडलाइंस. Make your own structure. Because if you chase a deadline, you will keep chasing and you will not be able to organize yourself. There will be anxiety, there will be fear. अगर आप स्ट्रक्चर करके चलेंगे, ये फियर और एंजाइटी आप पहले ही कवर कर चुके होंगे. जब आप पहले कवर कर चुके होंगे तो डेडलाइन ऑटोमेटिकली मीट होगी. और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको हाइपर एक्टिविटी होती है. हमारे जितने बच्चे हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी है, उनको हर वक्त एक मोबाइल यूजेज की वजह से उनको हाइपर एक्टिव ब्रेन है उनका. तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद ये है कि वो डेडलाइन ना चेज कर रहे हो. डेडलाइन चेज करने के बजाय अपने आप को स्ट्रक्चर कर लें, डेडलाइन खुद ही मीट हो जाएगी. थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मेक हैबिट्स and stick to those habits. When you stick to those habits, your things will start falling into your practice yourself. Habits का सबसे आसान तरीका क्या है? जो लोग हमारे पास यहाँ पर अगर सारे मुसलमान बैठे हुए हैं तो अपनी हैबिट बना लें कि जी सारा कुछ जो है वो हमने नमाज के टाइमिंग के अराउंड मैनेज करना है. ठीक. और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहे नमाज के टाइमिंग को, या उनकी टाइमिंग मुख्तलिफ है, तो वो अपना स्ट्रक्चर एक बना ले, एक अपनी हैबिट बना ले, मैंने ये काम इस वक्त करना है, ये काम इस वक्त, एंड स्टिक टू दैट. इस एज में स्टिकिंग टू द हैबिट इज इजी. आप लोगों को मैं एज अ मदर बता रही हूँ, यू वर डिजाइन टू स्टिक टू अ स्केड्यूल. आपकी अम्मियों ने एक स्केड्यूल के तहत पाला है. मैं भी अपने बच्चों को एक स्केड्यूल के तहत पाल रही हूँ. सारी अम्मियों ने एक स्केड्यूल के तहत पाला है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग रिस्पॉन्ड वेल टू एन स्केड्यूल ऑफ द डे, सेंस ऑफ द डे. यहाँ किसी ने लिखा है अर्ली स्लीप, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज जस्ट फॉर 15 मिनट, अवॉइड बुलशिट फ्रेंड्स, understand new things daily, listen music and daily talk to your family. All of these are beautiful habits. Paint, write, think.
Give yourself time to do nothing. एग्जैक्टली। चलिए Give सब बात yourself कंप्लीट करते हैं, time. so we just have So few thank you minutes so only. very much. 3 Yeah, पॉइंट्स मेरे आपके पास हैं, आप लोग जो है वो उस पर फोकस करें. प्रोक्रेस्टिनेशन और क्लॉक बनने के लिए घड़ियां काफी हैं. एग्जैक्टली। जनाब वेरी ऑडियंस, जेविरिया ने और जबात ने एक्सेलेंट तरीके से, आप ये देखें, दो पर्सपेक्टिव्स थे और दोनों एक ही तरफ लेके जा रहे थे। समझाने का स्टाइल डिफरेंट था, एक एकेडमिक पर्सपेक्टिव था, एक इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव था, दोनों एक ही तरफ लेके जा रहे थे। पॉइंट क्या है, देखिए डेडलाइंस की जो बात है, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। खाली डेडलाइंस को फॉलो करना ऐसे ही होता है कि बिजली के बिल को इंतजार करना कि लास्ट डेट आएगी तो जमा कराएंगे और फिर भूल जाना या लेट हो जाना और फिर आपको सरचार्ज पड़ जाना। एक्जैक्टली चीज है, स्ट्रक्चर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, चीजों में करता हूँ, अपने टास्क स्ट्रक्चर करें चीजों को, जो बिल्कुल एग्जैक्टली जवेरिया ने जिस तरह प्रेजेंटेशन दी थी और जो पॉइंट से बात ने समझाए कि आप चीजों को ब्रेक करें, स्ट्रक्चर करें, आप छोटे छोटे टास्क कर लें। ईट द फ्रॉग वाली बात है कि सुबह जब आप उठते हैं ना, जो पहला काम, आप एनर्जी होती है आपके अंदर, पैशन होता है, आप थके हुए नहीं होते, आपका दिन का स्टार्ट होता है। और अगर उस वक्त आप बल्क काम कर लें तो उसके बाद आपको कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाती है चीजें करना, चीजें आपके सामने खुलती चली जाती है। सुबह सबसे एनर्जी के साथ करें। और अगेन जहां तक बात है, बड़ी उम्र लगी, हमने जिस उम्र में ग्रेजुएशन किया था, या जब मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, उस जमाने में मोबाइल ताजा ताजा आया था। जब तक कॉलेज में था तो मोबाइल था ही नहीं, जिंदगी उस वक्त भी गुजरती थी। अभी भी हम चीजें कर रहे होते हैं और हमारे पास, हम उसके बगैर हमारा काम चल जाता है, हमारा काम चल जाता है। आप दूर रखें, सर्दियों में तो वैसे ही थोड़ा दूर रख लें। उन्होंने कहा जी हॉस्टल में रहते हैं, कमरा एक है, स्विच बोर्ड थोड़ा दूर कर लें बिस्तर से, आप बिस्तर से निकलेंगे नहीं मोबाइल उठाने के लिए। और छोड़ दें इस हैबिट को। मोबाइल में आपको कि जो पबजी वबजी गेम्स वगैरह आते हैं, ये आप, और अब इंडिया में आपको एड्स में बकायदा लिखना पड़ता है उनको कि जी ये एडिक्शन हो जाती है। दे आर लीगली बाउंड टू मेंशन कि जो गेम्स आ रहे हैं आजकल ये एडिक्ट कर देते हैं, आप ना करें। इवन सर दर्द की गोलियों में लोगों को लिखना पड़ रहा है कि आप इनके एडिक्ट हो जाते हैं। ये जब तक आप अपनी जिंदगी से वेस्टेज को नहीं निकालेंगे। मैं लीन ट्रेनर हूं, कैसा ट्रेनर हूं। लीन क्या होता है, फैट निकाल देना, अपने प्रोसेसेस को स्मूथ करने के लिए जो फालतू टाइम होता है वो निकाल देते हैं। तो जब तक अपनी जिंदगी से फालतू चीजों को नहीं निकालेंगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। जवेरिया, जस्ट फॉर लास्ट 1 मिनट फॉर यू, अगर 1 मिनट में समराइज करें ताकि उसके बाद हम क्लोज करें। आपका मोबाइल माइक बंद है जी जी जवेरिया। जी, ओके 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 जी। बस यही है कि बड़े अच्छे सबकी मैंने बातें सुनी, वेरी नॉलेजेबल। बस यही है कि आप अपने सबसे पहले देखें, वैल्यू अलाइन करें, वैल्यूज क्या हैं, किन वैल्यूज पे आप जो है प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को, गोल सेट करें, उनको प्रॉपरली रियलिस्टिक गोल सेट करें और फिर उनको मैनेज करें। और जहां पहुंचे अपने टाइम से आप पहले पहुंचे, ताकि आप लोग इंटरव्यूज हो, आपका कोई भी इवेंट हो, वो आप उसको बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ ले जा सकें। उसके बाद उसको इवैल्यूएट करें और कंट्रोल करें। अपनी लाइफ को किसी एक तरीके से लेके चलना ही आपको किसी कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। थैंक यू। सबात, 1 मिनट फाइनल मैसेज। I will just want to say that make your life easy. Just follow what your heart is saying, and your heart is always taking you to the right direction. Don't follow the mobiles. अभी हम 3 लोगों ने, तीनों मसरूफ लोग हैं, तीनों ने आपके साथ 1-1 घंटा लगाया है। मैंने टोटल 2 दफा मोबाइल देखा, सबात ने भी 1 दफा मोबाइल देखा, जवेरिया ने नहीं देखा। तो हम भी तो आपके बगैर मोबाइल के बैठे थे ना 1 घंटा। तो प्लीज, डिसिप्लिन बड़ा जरूरी है और प्रायोरिटाइज करें चीजों को, सबसे इंपॉर्टेंट। और एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अपनी जिंदगी में जब भी स्केड्यूल बनाए 15-20 मिनट की ब्रेक्स जरूर लीजिएगा। जब आप ब्रेक्स नहीं लेते तो आप खुद ब खुद, आपका जहन ब्रेक मांगता है। अगर आपको टीवी देखना पसंद है, आपको किताब पढ़ना पसंद है, ब्रेक्स लें ताकि आप रिफ्रेश हों। आप, कोई इंसान जो है वो 8 घंटे 10 घंटे इकट्ठा बैठ के ना पढ़ सकता है ना काम कर सकता है। ब्रेक्स ऑफिस में भी टी ब्रेक्स होती है, लंच टाइम होता है, नमाज के टाइम के लिए ब्रेक होती है। अपने स्केड्यूल में ब्रेक जरूर रखिएगा ताकि हेल्दी एक्टिविटीज के साथ करें। इसके साथ हम आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। जवेरिया एंड सबात, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ फैंटास्टिक वन ऑफ द मोस्ट, लाइक जितने मैंने कंडक्ट किया आज सबसे मुझे मजा आया। वैसे कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि वर्किंग पीपल के लिए भी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी टाइम इतना इंपॉर्टेंट है। और खासतौर पर जवेरिया, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। अगर पॉसिबल हो तो भेजिएगा, हम लोग फायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। और ये अवेलेबल होगा फेसबुक पे पूरा का पूरा, कोई बाद में भी देखना चाहे तो देख सकता है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।